Hello students, good morning to all. So previous question previous class में देखते हैं resistance and resistivity. मतलब what is the resistance and what is the resistivity? What are their units? And on which factors the resistance and the resistivity depend on. The most important thing is that the resistance depends upon the four factors. Particular physical conditions, that is the length and area of cross section, and another two factors the nature of the material and the temperature. Whereas resistivity depends on the nature of the material and the temperature, but it is independent of the physical dimensions, that is your length and area of cross section. So today we will discuss about the effect of temperature on resistance and resistivity. जो देखिए लास्ट रे कहथिली प्रथम थिला कोन लेंथ, दुई रे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीन रे नेचर ऑफ दैट मटेरियल, चार थिला टेंपरेचर, सेवेला रेजिस्टिविटी रे नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेंपरेचर. द लास्ट जो टेंपरेचर थिला तो से जिनसडा में देखिबा हाउ the resistance and resistivity both are affected by the temperature. Clear? Suppose let R0 and a resistance of a conductor at 0 degree centigrade. Clear? Now let me R0 is the resistance of the conductor at 0 degree centigrade. Next, R theta, resistance of the same conductor at theta degree centigrade. Suppose molecular at 0 degree centigrade बेले resistance of a conductor कहते R0 and at theta degree centigrade अर्थात when it is heated then theta at theta degree centigrade कहते resistance है लगते R theta. तल कौन देखिए there is a variation of resistance तल कहते हैं तले the variation of resistance or change in resistance. Change in resistance. Change in resistance. So change in resistance we denote delta R is equal to the final minus of initial, final R theta minus of R0. Clear? This is your change in resistance. कहते बारे now when the temperature rises, तले change in temperature, change in temperature, तले we can write delta theta. This is final minus of initial. We can write theta. Clear? तो अपन देखियो ये जो change in resistance, the resistance change it was found there. It was found there experimentally. Practically it was found there. This change in resistance delta R is proportional to original resistance, right? Initial resistance. है तो इनिशियली जति रेजिस्टेंस थिला तार प्रोपोर्शनल जदि इनिशियल कम थिबो तले वेरिएशन कम रहबो एवं इनिशियल जदि अधिक रहबो तले वेरिएशन मध्य अधिक हला. द सेकंड थिंग अब कोन हला डेल्टा आर अगेन proportional to the rise in temperature. अर्थात
आमे जते अधिक टेम्परेचर राइज करिवा सेते मध्य अधिक रेजिस्टेंस चेंज होला दीज आर द टू प्रैक्टिकल इवेंट्स हला तो practically it was found that this variation the change in resistance is proportional to the initial resistance is proportional to the rise in temperature suppose मने करो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे थिला हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करबा जति रेजिस्टेंस चेंज हला हमें 0 रो जदी 50 डिग्री को जिबा तले अधिक टेंपरेचर अधिक रेजिस्टेंस चेंज हला तो से कई बार गला तो डेल्टा r is proportional to the initial resistance and delta r is proportional to the rise in temperature if we combine these two factors हमें ये दीटा को कंबाइन कर दवा तब कौन पाएगा तो डेल्टा r is proportional to r0 into delta theta क्या तो डेल्टा is proportional to r0 into delta so that implies delta r is equal to तले if we eliminate हमें ये proportional से ना उठेगा तले we are a proportionality constant now that proportionality constant is alpha here हमें साधारणतः कौन सा proportionality constant k नहीं किंतु ऐसे हमें कौन ले alpha so this is the delta r is equal to alpha r0 delta theta where alpha is a proportionality constant है called say constant को कौन कैसा है called the temperature coefficient of resistance है ना तब हमें कौन कहेगा the temperature coefficient of resistance temperature coefficient of resistance of a resistance here note down तो delta r is equal to alpha r0 delta theta where alpha is called temperature coefficient of resistance clear तो मतलब देखिए this r can be written as this what is delta तो मैं क्लिक करूंगा delta r कितने थिला r0 r theta minus of r0 तो r theta minus of r0 is equal to alpha r0 into delta theta की theta है ना वही पुट कर delta r और delta theta को जो पुट कर delta r कितने थिला ना r theta minus of r0 delta theta कितने थिला ना theta minus of 0 that is called theta थिला so this can be written as r theta is equal to r0 plus alpha r0 into theta here so let us continue तो मैं कौन कर पाएगा take r0 common 1 plus alpha so this is the expression for the resistance of a conductor where the temperature changes from 0 to theta degree centigrade है ना r theta is equal to r0 1 plus alpha theta here if in a question r0 alpha and theta are given then you can find out the resistance of the conductor at theta degree centigrade. So this is the expression for
the resistance of a conductor when the conductor is heated from 0 to theta degree centigrade. So this is the expression. This is the expression for the resistance of a conductor for the resistance of a conductor when it is heated from 0 degree centigrade to 0 degree centigrade to theta degree centigrade. Clear? তাহলে সেটার তোমার রেজিস্ট্যান্স কেতে গেলা r theta is equal to r0 into 1 plus alpha theta. অর্থাৎ if the temperature changes, r theta is also changes. So in this way, the resistance of a conductor changes with the temperature. The most important is that if the conductor conductivity, the temperature varies from 0 degree to theta degree centigrade. So this is a specific condition. In generally suppose तुमको conductor एबे दिया जायछि एवं ताकू कहा जायछि heated करो एवं तापर ता रेजिस्टेंस को मेजर कर केते होला तल केमति बात करिवो तले वर्तमान जो कंडक्टर टा अछि तो से कंडक्टर रा टेंपरेचर केते not 0 degree centigrade. So the resistance of the conductor is not 0 degree at 0 degree centigrade. So how can you find out the resistance of the conductor at a particular temperature? So हमको प्रथम कौन करियो पड़िबो एक्सप्रेशन को टिके मॉडिफिकेशन करियो पड़िबो. तो केमति suppose the conductor is heated from theta 1 to theta degree centigrade. So if the conductor, this is the general expression, if the conductor is heated from theta 1 degree centigrade to theta 2 degree centigrade. That means you can choose any two temperature difference. Suppose 10 degree to 15 degree, 20 degree to 30 degree, whatever may be. Hello? So what is the expression for the resistance of the conductor? If the conductor is heated from theta 1 to theta 2 degree centigrade. तले केमति लिखिबा ना हमें जोड़ा पाइले जन मतलब स्पेसिफिक कंडीशन से अनुसार केमति लिखिबा तले माने करो एट एटा लिखिए हमें कौन लिखले r theta is equal to कौन लिखले 1 so r0 into 1 plus alpha theta लिखले हमें सेम फॉर्मेट रे लिखिबा r theta के that is the final where it is heated to theta degree एठी कर दे फाइनल कर दे थीटा 2 तले r थीटा 2 is equal to r0 के इनिशियल अर्थात when it is at 0 एटी कोन अछि इनिशियल थीटा 1 r थीटा 1 into 1 plus alpha एटी कोन अछि थीटा थीटा टा के थिला डेल्टा थीटा थीटा minus of 0 that means final minus of initial एटी फाइनल के थीटा 2 minus of theta. This is the expression for general case. If the conductor is heated from theta 1 degree centigrade to theta 2 degree centigrade, then what about its resistance? The resistance टा कितने होगा? ना r theta 2 अर्थात resistance at the temperature theta 2 is equal to the resistance at the temperature theta 1 into 1 plus theta 2 minus of theta 1 अर्थात 1 into alpha into temperature difference. Clear? This is your general expression. This is a special condition. If the conductor is heated from 0 to any temperature, if the conductor is heated from one temperature to another temperature. Yes.
Clear? तो सिमिलरली हमें देखिए रेजिस्टिविटी के तरह देखना आज R के तरह R is equal to rho L by A. So that implies R is proportional to rho. R is proportional to rho. If a conductor is given, suppose in a particular conductor that means length and area constant, then R is proportional to rho. तो same अनुसार हमें लिख परिवार तो how the resistivity of a conductor vary with the resistance. तो लिख परिवार if the conductor is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. The resistance कितना दिला R theta is equal to R0 into 1 plus alpha theta. तो जेहेतु R is proportional to ये लेला L rho, then it can also written as rho theta is equal to rho 0 into 1 plus alpha theta. कारण R यदि proportional to rho हैला तले R is equal to any constant rho तले मने कर suppose that constant हैला k तले k rho theta is equal to k rho 0 k cancel out तो वेला किते तले rho theta is equal to rho 0 into 1 plus clear. Similarly you can write if the conductor is heated from tell me any one temperature theta 1 degree centigrade to theta 2 degree centigrade. Then first write the resistance. Then R theta is equal to theta 2 is equal to R theta 1 into 1 plus alpha theta 2 minus theta 1. Similarly, we can write resistivity rho theta 2 is equal to rho theta 1. Now, R theta 2 is equal to k, rho theta 2, it is k rho theta 1, k cancel out. So, it is 1 plus alpha theta 2 minus theta 1. Clear? So, these are the two most important formula. Where the conductor is heated from 0 to any temperature. Second formula tells you genuine temperature अर्थात when the conductor is heated from any one temperature to another temperature. So first one is a special case, second is a general case. ହେଲା तले हमें कौन देखिले तो हमरो topic थिला effect of resistance on resistance, so effect of temperature on resistance resistivity. हमें कौन देखिले both the resistance and resistivity defects on temperature. हैला तो एठा के नया टर्म्स बाहर कले जोटा कि अल्फा न्यू टर्म, that is the temperature coefficient of resistance. तो सेटा कौन बटन से डेरिवेशन है ना, the temperature coefficient of error resistance. देखो temperature coefficient of resistance. Hello, what is this? जो देखा मैं कौन ने दिले अल्फा बोले डिनोट कर दिया temperature coefficient of resistance. हाँ तले अल्फा का कौन हासिल है प्रथम देखिए और फिर आपको फॉर्मूला पाई दिला अल्फा ना डेल्टा r we know delta r is equal to कितना दिला अल्फा r0
into delta theta याद रखना तापर आम्ही डेल्टा और डेल्टा थीटा वैल्यू पुट करके आम्ही त्याको प्रोसीड करतले तर इथे पासून अल्फा के that implies तर what is alpha तर alpha is equal to delta r divided by r0 into delta theta. This is the alpha. So alpha is nothing but it is the change in resistance for unit resistance at 0 degree centigrade or degree rise in temperature from 0 degree centigrade. Clear? So this is the currently it is the constant for a given material. Suppose iron load alpha value jaha copper alpha value se ano ki aluminum alpha value se it varies from material to material. लिखवा चले 10. So how can I define alpha? Thus temperature coefficient, the temperature coefficient of the material of the conductor, you might it the material of a conductor is defined as how can I define from this formula is defined as the change in resistance for unit resistance divide करके अगर R0 तब per unit resistance और degree rise in temperature for degree rise in temperature from 0 degree centigrade. Here, so this is the alpha. The alpha is defined as delta by R0 अर्थात जितना में कौन दिलेली delta R कौन ला variation ला resistance कितने बड़े if there is a initial resistance कितने दिला R0 एवं temperature कितने change दिला delta theta. तो delta is the change in resistance on the given resistance R0 एवं कितने temperature दिला delta theta. तर per unit को कितने ला ना delta R का याद से है ऊपर लगी is the defined as the change in resistance per unit resistance. यदि R0 को एतिक resistance change होला तले गोटे unit resistance को change पाई केते वेरिएशन होला then per degree rise in temperature एटी केते temperature हिची delta theta तले गोटे डिग्री को केते रहला ना by delta theta दोठो ना from 0 degree centigrade. So this is the alpha. So alpha or temperature coefficient of the material of a conductor is defined as the change in resistance for unit resistance per degree rise per degree माने per unit degree rise in temperature from 0 degree centigrade. This is your alpha. Next, so what is the unit and dimension of alpha? Or what is the alpha is a constant for a particular material. So basically it is the material, it is the characteristics property of a material. It does not depend on this. Alpha is constant for a given material. Alpha is constant for a given material.
for a given material. Iron तमरा आयरन साइज जते तमरा कहेंगे आयरन तमे जते टेंपरेचर राइज करना कहेंगे ऑलवेज इट इज एन आयरन तेनु अल्फा वैल्यूज दैट सबरेट बाय कांस्टेंट तमे गरम कले भी से अल्फा वैल्यू से आरेगो रेजिस्टेंस कमे ले भी से आरेगो तो अल्फा इज ए characteristics property of the material of a conductor हैला तो नेक्स्ट हम देखिबा व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा क्लियर प्रथम है यूनिट তাহলে আমরা আলফা কোন ফর্মুলা পাইলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা বাই r0 ইনটু ডেল্টা ডেল্টা r न्यूमरेटर में कौन रहेगा डेल्टा r डेल्टा मींस चेंज इन रेजिस्टेंस तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस if we consider SI system SI unit that is ohm so what is the change in resistance that is ohm ताले ohm को ohm रे फेडिले कौन पाइबा ohm पाइबा ताले change in resistance is ohm ताले हमें कौन पाइले ohm yes ohm divided by resistance ohm into change in temperature what is the temperature unit of temperature SI unit of temperature is Kelvin हैना so we can write Kelvin the Kelvin temperature difference Kelvin minus of Kelvin that is also Kelvin so ohm can flow that is equal to Kelvin minus 1 or you can write Kelvin जगह में कौन लिख पाएगा degree centigrade so this can be written as degree centigrade inverse clear तले यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स लिख पारा और जे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स मत लिख पाएंगे क्लियर तो नेक्स्ट हम देखिए आरो डायमेंशन व्हाट इज द डायमेंशन the dimension formula of alpha dimensions है तो अल्फा डायमेंशन कौन हो देखो अल्फा कौन पाइले इट इज ए केल्विन इनवर्स बाय डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स दैट मींस दिस इज द रेजिस्टेंस ऊपर रेजिस्टेंस रे डायमेंशन तळे रेजिस्टेंस रे डायमेंशन कटि गला और डिनोमिनेटर रहला टेंपरेचर द टेंपरेचर कौन थिला s केल्विन माइनस 1 टेंपरेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी तो फर्स्ट रे जेतळे तमे पढाई को डायमेंशन हलाडी द एसआई सिस्टम रे SI यूनिट रे हमरे कोन दैतिला एसआई रे हमर साधारणतः सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी एवं ए सातटा रो कोन थिला डायमेंशन थिला जोटा कि कह जाय 7 पिलर्स ऑफ फिजिक्स ऑल द फिजिक्स बेस्ड ऑन दिस 7 पिलर्स हलानी ए सातटा पिलर ऊपर तमरा फिजिक्स अर्थात ये सातटी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं we can write all physical quantities or all the physical quantities can be expressed on these 7 basic quantities तो ये 7 basic quantity को कौन कहतला 7 pillars in physics से सातटी के दिला mass length time temperature current illumination of light and amount of substance these are the 7 pillars of physics clear तो तार भीतर रे टेंपरेचर थिला जहार डायमेंशन केते थिला k हैला तले कोन अछि तळे अछि टेंपरेचर तणो k - 1 तो we can express it in full form that is equal to m0 l0 t0 k minus 1 हैला तब तक कहते mn के ऑर्डर में मैं रखिबा तले m0 l0 t0 k minus 1 so this is the dimensional formula of temperature coefficient of resistance clear the next तो हमें देखिए the temperature coefficient of resistance alpha विषय रे एबे हम देखिबो this alpha
is a constant. Here it may be positive, negative or zero. So kind alpha ta kind positive, alpha ta kind negative, alpha kind zero. On which circumstances, on which condition, but for which materials alpha is positive, and for which materials alpha is negative, and for which materials alpha is zero. So alpha कौन पहला? So alpha is equal to delta R divided by R0 into delta theta. Clear? अब इस में आउट के एक्सप्रेस करेगा. This is your R theta minus of R0 divided by R0 into theta minus 0. Clear? तो एठी कोन अछि डिनोमिनेटर थीटा माइनस 0 अर्थात थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1 जहा करबा अर्थात दिस इज द टेंपरेचर डिफरेंस. एठी हम कोन करू छली टेंपरेचर राइज करू छै. जदि हम टेंपरेचर राइज करिबा त दिस इज द थीटा 2 एवं दिस इज योर थीटा 1 त दिस विल बी पॉजिटिव and 0 is positive, resistance is always positive. तो लिखा है कौन पहले डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. ठीक है, डिनोमिनेटर कौन वाला पॉजिटिव. एबे लिखा है न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर कौन है परिबो? दिस इज द r0 which is constant given. This is r theta that changes with the temperature. Clear? तो r theta जेतबे चेंज होछि एवं r0 is constant ताले एठी देयर इज ए क्वेश्चन. जदि r थीटा r0 टू अधिक आला ताले यस इट विल बी पॉजिटिव. जदि r थीटा r0 टू कमिला दैट इज नेगेटिव. इफ r थीटा इज इक्वल टू r0 हिगला ताले दैट इज 0. तो जेहेतु कि r थीटा टा चेंज होछि ताले से चेंज अनुसार हम एठी लिखि परिबा हला. ताले इफ r theta greater than r0 then that implies एबे को अल्फा कोन है जो तला अल्फा कोन पहले if r theta is greater than r0 then this is your positive. तले positive by positive is positive. तले alpha is positive. Clear? तले alpha केतना हैला जानि पाइलो positive if r theta is greater than r0. That means if the resistance of a material increased by rising temperature, जदि टेम्परेचर बढ़ाइले रेजिस्टेंस बढ़ु था तले से जगह रे से बड़ी सब्सटेंस रे अल्फा टा कोनवा पॉजिटिव हो हला. r theta is greater than r0 अर्थात if the resistance increases with the rising temperature then alpha is positive. So that implies if the resistance increases with the increase in temperature, with increase in temperature, then alpha is positive. Here increases. If the resistance increases with the increase in temperature, अर्थात यदि r theta is greater than r0 हैला ताले कोनवा alpha is positive. And switch cases example हैला mean metallic conductor हैला pipe conductors हैला conductor हैला basically conductor रे कोन उठे साधारणतः when the temperature rises resistance increases. Why the resistance increases with the increase in temperature in a conductor? तो हमें यदि मुड़ू बुझिबा तो रेजिस्टेंस कौन? इट इज द ऑपोजिशन काहर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैला. द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस को कौन कहथिले? द ऑपोजिशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो
तो जते हम टेंपरेचर राइज करू से तरे कोन हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले अवेलेबल अधिक रु अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन कोन आबे सब बाहरिबे फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरिबे जते ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गुडी को अधिक टेंपरेचर हे जिवो से तरे कोन करबे समान सब एटम रु बाहरी आसीबे तेबे एटी कोन हे गला फ्री इलेक्ट्रॉन्स increases जदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहिला से कंडक्टर सही लेंथ सही एरिया प्लस सेक्शन बट नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ी गला ताले कोन हो से जगह रे कोलिजन्स बढ़ी जीवो माने कर रास्ता रे किछि नथला हठात क्राउडेड हे गला कोन हे गला अगर एक्सीडेंट हे जेछि रास्ता पूरा जाम हे गला ताले कोन हो से जगह रे कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन्स तेनु से काय गला in case of a conductor if the temperature rises resistance increases if the resistance increases alpha is positive question is karibo in which cases alpha is positive in conductors alpha is positive clear next is jawab second possibility kon कहथिले if r theta is less than हला जदि r थीटा टा कोन हेगला लेस देन हेला ताले कोन if r theta less than r0 so if r theta less than r0 देखो if r theta is less than r0 तमारे कोन वाला न्यूमरेटर is negative न्यूमरेटर कोन हेगला नेगेटिव तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव is नेगेटिव देखो तो if r theta is less than r0 then alpha is negative clear तो हम एखाने कोन पढो छे टेंपरेचर राइज तो डिनोमिनेटर टा पॉजिटिव कारण ऑलवेज द टेंपरेचर राइज तो if the resistance decreases exactly decreases if the resistance decreases within increase in temperature then alpha is negative clear जदि हम टेंपरेचर बढ़ेबा द्वारा रेजिस्टेंस कोन गला कमी गला तले से जगह रे अल्फा टा हे जीवो नेगेटिव तले in which cases in which materials in which substances alpha is negative ना जो धीरे रेजिस्टेंस डिक्रीजेस अब हला तमने रेजिस्टेंस कोन अछि इंक्रीज अछि हमें टेंपरेचर बढ़ले रेजिस्टेंस फॉल्स डाउन कमिला तले कोथले टेंपरेचर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई with which substances which metals resistance is very high in case of insulator semiconductor the insulator or semiconductor रे साधारणतः at ordinary temperature रे resistance is very high clear तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर रे कोन जाने छ there is no free electrons if there is no free electrons there is no current flow that means the resistance is infinite the resistance is very high तो जदि हम सही भली मटेरियल्स गुडी को कोन करबा हिट करबा ताले कोन ना जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रांगली बाउंड हेतला एटम सहित तल से जते बडे कोन हबो गुडे हाई एनर्जी पाइला कोन हबो बायस माने करा सपोज द रोड इज एम्प्टी पूरा वैकेंट रास्ता 144 बा और कोविड-19 बर्तन जो शटडाउन लॉकडाउन चल से तो रोड इज एम्प्टी नो पर्सन्स आर देयर सपोज जदि किछि पर्सन आसिले त देयर मे बी कोलिजन तो एठी इंसुलेटर में कोन से फ्री इलेक्ट्रॉन नथिला that means the resistance is very high तो जेहेतु तमरे कोन आइला फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसिला तले कोन बेटी करंट फ्लो तमरे करंट फ्लो माने कोन the resistance decreases तो एठिया में जानिले in case of insulators and semiconductors yes in case of insulator or semiconductor we will discuss semiconductor detail in semiconductor devices पर chapter जोडे कि तमरो
ninth unit हला तो insulator and semiconductor रे what way free electrons सृष्टि when there is a free electron there is a flow of current that means resistance decreases अर्थात alpha is negative in case of insulator and semiconductor alpha is positive in case of conductor the next thing is when the here right now the next one is third case so third case if the resistance is equal to no change initially jaha thila hit kala pare madhya share rahila r theta is equal to r0 then what about if r theta is equal to r0 numerator is a 0 if numerator is 0 0 by something is a 0 तो alpha कौन वाला 0 वाला नहीं alpha में प्रथम लिखते हैं पॉजिटिव सेकंड में लिखते हैं नेगेटिव थर्ड केस में कौन पहले alpha is 0 तो alpha कितना 0 होगा ना if r theta is equal to r0 तो माने क्या if there is no change in resistance either decrease or increase if the resistance does not change with the rise or fall in temperature with the increase in temperature if the resistance does not change with the increase in temperature clear with the increase in temperature then alpha is 0 if the resistance does not change no change of the resistance the says again what is alpha 0 is 0 तले को जगह alpha 0 हो ना हमने substance को गरम करिबा हीट दवा किंतु रेजिस्टेंस रे कोनसी फरक पड़िबो नाही नो डिफरेंस नो चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस अरे प्रथम जब कहले कंडक्टर तापरे कहले सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हमर तो सब्सटेंस तीन प्रकार कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर जोड़े के कैपेसिटेंस रे पड़िदिबो नहीं कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ताले आउ कोन एमिति सब्सटेंस रहला जोतिरे resistance change होबो नाही with the increase in temperature now they are the alloys सेउडी को केलेला alloys ना conductor ना insulator ना semiconductor they are known as alloys manganese constantan these are the alloys it is the combination of number of materials हैला तो ए गुडी को साधारणतः गरम कले तांकर देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस तो हम कोन ले एग्जांपल ला सम alloys alloy like manganese constantan like this तो ये गुडी को साधारणतः आई को हमें हिट देले और वे देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस तो अल्फा इज 0 है तो अल्फा कोन है पारे अल्फा वैल्यू कोन है पारे पॉजिटिव है पारे नेगेटिव है पारे 0 भी है पॉजिटिव को क्षेत्र रे हो इन केस ऑफ ए कंडक्टर नेगेटिव को क्षेत्र रे हो in case of semiconductor and insulator एवं alpha 0 केते बडे होबो in case of some alloys है ना तो बेसिकली जेहेतु alloy रे रेजिस्टेंस परिवर्तन हुए नहीं तो साधारणतः हमें alloy गुडी को कोठी यूज करू तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन where we use the alloys है ना
The alloys are used in case of heating elements. तो साधारणतः heating elements गुडी करे alloy व्यवहार करा जाए काहे के alloy व्यवहार करू ना गरम हेले रेजिस्टेंस परिवर्तन होबा नै हमें जानिले कोन प्रथम कोन कहली तो variation of resistance with the temperature, the temperature effect on the resistance and resistivity. जदि टेम्परेचर परिवर्तन हैला तले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी परिवर्तन होबो किंतु एलॉय रे कोन बे ना टेम्परेचर चेंज हेले मध्य रेजिस्टेंस चेंज होला नाही जे रेजिस्टेंस चेंज होला नाही ताले कोन बेटी साधारणतः measuring instrument based on heating effect like ammeter voltmeter ये गुडी को इंस्ट्रूमेंट रे साधारणतः पोटेंशियोमीटर हला तो एथिरे आमे जो मेटेरियल यूज करू से तो से गुडी को एलॉय काहे कि now whenever the current passes through the wire तो भितरे जो वायर लागला कॉइल अछि से कॉइल रे यदि करंट पास हुए ताले कोन हबो it will be heated up हमें पढिबा पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यदि गोटे कंडक्टर देरे हमरा कोन हला करंट होला इट विल बी हीटेड अप तो जते हीट हला त सर कोन हबो टेंपरेचर बढ़िला टेंपरेचर बढ़ले देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज क्लियर तो जदि टेंपरेचर जो को रेजिस्टेंस कम बेसी हला ताले कोन हबो करंट विल बी चेंज तेणु आमे जो इंस्ट्रूमेंट रे मापुथले करंट बा वोल्टेज मापुथले द रिजल्ट विल बी फ्लक्चुएट तो रिजल्ट टाइम टू टाइम कोन हो तमरा डिफरेंट वैल्यू आइबो वर्तमान आमे इनिशियल फेज रे जहा करंट पाइले किस टाइम पर देखियो आपण करंट चेंज हेइबो काहे ना रेजिस्टेंस चेंज हे गला से जो भीतर कॉइल अछि जो कॉइल भीतर दे करंट पास होचे सेटा चेंज हे गला तेणु कोन बेटी रेजिस्टेंस चेंज हेले करंट चेंज हे तेणु आमे गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे गोटे कांस्टेंट रीडिंग पाई परिबा नाही तो सेथि पई आमे कोन करू से जगह रे से जो कॉइल का तैयारी करा गला जो भीतर कॉइल दे आर मेड ऑफ alloys that is constant on manganese etc तेणु तो क्वेश्चन असला why the alloys but why we use the constant term and manganese in measuring instrument because its resistance is not affected by the rise in temperature hela kora le kariba not point such alloys are used in measuring instrument measuring electrical instrument here measuring electrical instrument तो जो धीरे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रे हमें सो मेजर करू मापो तो से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रे साधारणतः हमें एक एलॉय बॉडी को व्यवहार करू कारण दे डू नॉट अफेक्ट विथ द टेंपरेचर क्लियर तो नेक्स्ट क्लास देखो हमें कौन रेजिस्टेंस विषय में टोटल पिक्चर देला the next class will discuss about its inverse reciprocal और reciprocal तो रेजिस्टेंस का काम है कौन to oppose the current तो reciprocal कौन हो तो रिवर्स कौन हो allow the current है तो जे करंट अलाउ करिवो तो से की तो नेक्स्ट क्लास में देखिबा
the quantity that allows the current in a conductor. तो कहा जो कंडक्टर रे current flow होची हला which conducts the current in a conductor, that is a conductance. तो ताको ଆମେ कोन कहै conductance बोली कहला हला resistance is nothing but that is the opposition to the flow of current. Conductance is nothing but it is conducts the current. Conduct to conductance. Conduct means allow, which allows the current through a conductor, that is known as the conductance. Hala? The next class I'll study about the conductance. Clear? Thank you to all. We golla karbe. Ini, ini kotak